Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 17. The name of the paper is Introduction to Linguistics. The chapter is Morphology and the topic is morphs and allomorphs. This lecture is specifically for the students of BA second semester GDC PABI and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. Morphs and allomorphs is the topic. It would be quite easy for you to understand if you first listen to the lecture in phonology, which is about phones and allophones, because in morphs and allomorphs we will use the same analogy of phones and allophones. So we have already discussed in phonology that phonemes are abstract and they are realized when you speak them. They are realized from the mind to the reality. When they are realized, they become phones. So a phoneme is abstract, but when it is realized, it becomes phones. But sometimes one phoneme may come in different shapes of phones, and those shapes belong to the same phoneme, therefore they are referred to as allophones. So we are using the same analogy of phones and allophones and fit it over morphs and allomorphs. The analogy is the same, so therefore you should listen to that lecture in phonology in which I have explained phones and allophones. For example, if you take cats, which is a single word, but it consists of two morphemes. One is cat, which is the main lexical morpheme, and the next is s, which is realized, and it is the plural inflectional morpheme. This s sound can come with bus, bus. If you take this word buses, again it has the lexical morpheme bus and it has the inflectional morpheme es pronounced as us. So the first one is cats, the next is buses. So this last item in cats is s, and in buses is us, s and us, and these both can be represented with this word plural. This s is plural and us is plural. Both of them are plural, but they are pronounced differently. They are the different shapes of the same morpheme plural. So plural can come in the shape of s or in the shape of us. These are the same morphemes of the same different shapes of the same morpheme plural. Therefore we say that these are the allomorphs of plural. So we got that analogy now. The analogy of phone and allophone fits here on the analogy of morphs and allomorphs. So morpheme therefore is just like phoneme, and morph is just like phone, and allomorph is just like allophones. Therefore, as we considered in phonology, as we considered phoneme abstract, here we take morpheme plural as abstract, which abstract because it can come in different shapes and we don't know in what shape it would come. When we pronounce cats, we know that it is coming in s form, and when you say buses, we know that it is coming in us form. So plural in this case is a morpheme, just like phoneme, which is coming in the shape of s and us, which are its morphs, just like phones. And these are the morphs of the same morpheme. Therefore
they can be referred to as allomorphs. So this was the idea behind it. इसको ज़रा उर्दू में भी सुन लें. मार्फ्स और allomorphs को हम फोनोलॉजी के फनीम, फ़ोन और आलोफोन्स से समझेंगे. यहाँ पर है मार्फीम, मार्फ, आलोमार्फ. वहाँ पे था फनीम, फ़ोन, आलोफोन. तो आपको उस चैप्टर को एक मरतबा फिर पढ़ना चाहिए. उस लेक्चर को सुने जिसमें मैंने फ़नीम, फ़ोन और आलोफोन्स का ज़िक्र किया था कि किस तरीके से एक फ़नीम मुख्तलिफ़ शक्लों में आ सकता है और उनको फिर फ़ोन कहते हैं, और अगर ये एक ही फ़नीम के हों तो फिर उनको आलोफोन्स कहते हैं. इसी तरीके से हमारे पास मार्फीम है. मार्फीम एब्स्ट्रैक्ट है फ़नीम की तरह, ये मुख्तलिफ़ शक्लों में आ सकता है. हम उस शक्लों को मार्फ्स कहेंगे. और अगर ये मार्फ्स एक ही मार्फीम के हों तो फिर हम इन मार्फ्स को आलोमार्फ्स कहेंगे. मिसाल इसको क्लियर कर देगा. मसलन कैट्स एक लफ्ज़ है और इसमें दो मार्फीम हैं. एक ये लेक्सिकल मार्फीम है और एक ये इन्फ्लेक्शनल मार्फीम स है. इसी तरीके से बसेस एक लफ्ज़ है, इसमें दो मार्फीम्स हैं, बस है और जो कि लेक्सिकल मार्फीम है, और अज़ है जो कि इन्फ्लेक्शनल मार्फीम है. तो ये दोनों मार्फीम स और अज़, इनको हम प्लूरल कहते हैं. तो ये प्लूरल जो मार्फीम है इसको हम कहेंगे मार्फीम. इसकी ये जो मुख्तलिफ़ शक्लें रियलाइज़ हुई हैं इनको हम कहेंगे मार्फ्स. चूँकि ये दोनों मार्फ्स एक ही प्लूरल के लिए हैं तो हम कहेंगे ये एक ही मार्फीम की दो शक्लें हैं, लिहाजा ये आलोमार्फ्स कहलाएंगे. तो यूँ आप मार्फ्स और आलोमार्फ्स को समझते हैं. इसके लिए आपको फ़नीम, फ़ोन और आलोफोन्स को समझना ये बहुत ज़रूरी है. मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ. वन वे टू ट्रीट डिफरेंसेस इन इन्फ्लेक्शनल मार्फीम्स. इन्फ्लेक्शनल मार्फीम्स में जो फ़र्क हैं जैसे स और अज़ is by proposing variation in morphological realization rules. तो इनको हम समझ सकते हैं जब हम मॉर्फोलॉजिकल रियलाइजेशन रूल्स को समझें. यहाँ रियलाइजेशन स है और यहाँ रियलाइजेशन अज़ है और ये दोनों प्लूरल के रियलाइजेशंस हैं. In order to do this, we draw an analogy with some processes already noted in phonology. फोनोलॉजी में जो प्रोसेसेस हमने नोट किए हैं उसकी बुनियाद और एनालॉजी पर हम इसको करते हैं. जस्ट एज वी ट्रीटेड फोन्स एज द एक्चुअल फोनेटिक रियलाइजेशन ऑफ फोनीम्स. जैसे हमने कहा कि फोन्स फोनीम्स की रियलाइजेशन है, सो वी कैन प्रपोज मार्फ्स एज द एक्चुअल फॉर्म्स यूज्ड टू रियलाइज मार्फीम्स. तो मार्फीम को रियलाइज़ करने के लिए हम मार्फ्स इस्तेमाल करेंगे. जैसे प्लूरल एक मार्फीम है, एक रियलाइजेशन इसका स है और एक अज़ है. For example, the form cats consists of two morphs, cat and s, realizing a lexical morpheme, cat, and an inflectional morpheme, s, plural. The form buses also consists of two morphs, bus and us, realizing a lexical morpheme, yani bus, and an inflectional morpheme, plural, yes. So there are at least two different morphs, s and us. Actually s and us इसको ऐसे लिखते हैं. used to realize the inflectional morpheme plural. plural को s और us दोनों में realize करते हैं. just as we noted that there were allophones, ये हमने phonology के chapter में किया था, of a particular phoneme, so we can recognize the existence of allomorphs of a particular morpheme. जिस तरह एक ख़ास phoneme के allophones होते हैं, इस तरह एक ख़ास मार्फीम्स के आलोमार्फ्स होते हैं. That is, when we find a group of different morphs, अगर मार्फ्स का एक ग्रुप है, all versions of one morpheme, और ये एक ही मार्फीम के मुख्तलिफ realizations हैं, we can use the prefix allo, जिसका मतलब one of a closely related set. तो हम allo इस्तेमाल करेंगे इसके साथ.
and describe them as allomorphs of that morpheme, اور ہم اس کو اس مارفیم کا allomorph کہیں گے. So this was the first part. Now we will try to do the next part in the next paragraph. In this next paragraph, we take another example of the word plural. For example, if we take this as a morpheme which can come in different shapes, morphs in different morphs, which will be called allomorphs. For example, you can say cat plus plural, 2 morphemes, plus bus plus plural, 2 morphemes, sheep plus plural, 2 morphemes, and man plus plural, 2 morphemes. But you can see that the realization of plural here is cats, the realization of plural here is us in buses, the realization of plural here is 0. That is, with sheep we do not use any. So therefore we say it is a 0 realization. The morpheme for used with man, plural morpheme, that is a change, a vowel change, man to men. So therefore it is represented like this. A is changed to a. This is another example of the plural morphemes. Therefore this shape, morph, and all of them are the different shapes of plural, and therefore they are allomorphs. یہ ایک اور ایگزامپل ہے پلورل مارفیم کی، تو ہم اس کو کیٹ کے ساتھ لگاتے ہیں. کیٹ پلورل، بس پلورل، شیپ پلورل، مین پلورل. کیٹ پلورل تو کیٹس ہو جائے گا، بس پلورل بسز ہو جائے گا، لیکن شیپ کے ساتھ کوئی بھی چیز نہیں آتی، لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں 0 مارفیم. مین کے ساتھ بھی کوئی چیز نہیں آتی، انٹرنل واول چینج ہوتا ہے، اے سے چینج ہو جاتا ہے، اور یوں یہ سارے جو ہے allomorphs کہلائیں گے. میں اس کو ریڈ کرتا ہوں. ٹیک دا مارفیم پلورل. Note that it can be attached to a number of lexical morphemes to produce structures like cat plural, bus plural, sheep plural, man plural. In each of these examples, the actual forms of morphs that result from morpheme plural are different. تو یہ ڈفرینٹ ہے، یہاں س ہے، یہاں از ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہاں واول چینج ہے. Yet they are all allomorphs of the one morpheme. یہ سب ایک ہی مارفیم کے allomorph ہیں، اور وہ مارفیم پلورل ہے. So in addition to s and us, another allomorph of plural in English seems to be zeromorph. اور یہ کیس ہے sheep کے ساتھ، اس کے ساتھ کوئی نہیں لگتا. Because the plural form of sheep is actually sheep plus 0. When we look at man plus plural, we have a vowel change in the word a to a. یہ vowel change ہے as the morph that produces the irregular plural form man. تو یہ irregular ہے. There are a number of other morphological processes at work in language like English. اور بھی morphological processes ہیں such as those involved in the range of allomorphs for the morpheme past tense morpheme ہے. یہ walk کے ساتھ لگائیں تو ed بن جائے گا walked. یہ go کے ساتھ لگائیں تو vowel change ہو جائے گا went. اور یہ irregular ہے. تو یہ سارے this is the end of this chapter because we are not doing these topics. They are not important, and they for us from the examination point of view they are irrelevant. Therefore this is the end of the chapter of morphology, and today we discussed morphs and allomorphs. Thank you and good luck.